ओ हेलो स्वास्तिक भाई। वेलकम टू स्ट्रीम। और क्या हालचाल है भाई? आज फिर से एक स्ट्रीम चालू। आज लेट हो गया है भाई काफ़ी स्ट्रीम में, तो लेट के लिए सॉरी, कुछ काम आ गया था। मनु कुमार भाई हेलो वेलकम। हाँ भाई, आज बहुत लेट हो गया यार, आज बाहर जाना पड़ गया था ज़रूरी काम से। सोचा था स्ट्रीम ना करूँ, लेकिन बोला फिर भी चलो कर लेते यार। वैसे भी 3 बजे तक का तो हम ऐसे ही रहते हैं। एग्ज़ाम भाई खत्म, नो प्रॉब्लम, जितना भी इशू है। अरे चलो अच्छी बात है, चलो तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में एक विश कर लेते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। कुछ भी नहीं मिला रे बाबा। चलो एक और कर लेते हैं। वन मोर विश। और 4 स्टार वेपन। ये दो हो गए रे बाबा मेरे पास। इफ़ यू टायर्ड टेक अ रेस्ट भाई। अरे नहीं, वैसे भी जागते ही रहता हो यार मनु भाई। आज तो साला ये क्वेस्ट खत्म करूंगा ही मनु भाई, बहुत दिमाग की दही हो गई है टाइम वाला। डॉक्टर स्ट्रेंज बन के जो बैठा है ना सेज, टाइम के साथ खेल रहा है ये समारोह में मेरे साथ। आज तो खत्म ही करूंगा। Have you ever kept goldfish as pets? ओ बाबा, मेरे कमीशन बचे। तो पहला इसको करो, पहला इसको करो और टाइम खत्म हो जाएगा। कुछ ना, सेव हो जाएंगे, इशू नहीं है, अभी मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं, हो जाएगा सेव। मैं तो बस वो कर रहा हूँ, बढ़ा के रख रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो भी अच्छा है। कितनी बढ़ जाएगी? इससे पहले भी अपन ने 4,000 जमा करके रखे थे, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे। योमिया का टाइम 4,000 जमा था मेरा। आई एम इन इनोजुमा और कम भाई, जस्ट कंप्लीटिंग वर्ल्ड क्वेस्ट एंड स्टोरी क्वेस्ट। इनाजुमा का स्टोरी क्वेस्ट खुला है मेरे पास, अभी वो भी करना है। देखो मेरे पास भी इनाजुमा का है कि एक समारोह का चल रहा है, और एक इनाजुमा वाला किधर गया रे? अच्छा सॉरी, ये वर्ड का इधर है, इनाजुमा का ये पड़ा हुआ है। और ये आर्कोन है, ये आर्कोन आज खत्म करूंगा, इसकी जात का इसकी। बड़ा तंग हो गया हूँ भाई। जो ये फब्स सब्ज क्या, सब जीरोस फेस्टिवल में फंसा हुआ हूँ भाई। एक ही दिन के अंदर बार बार रिपीट हो रहा, दिमाग खराब हो गया था। रात को तो आधा पक ही गया मैं इसके चक्कर में। अरे मेरे पास चेस्ट बहुत पड़े हुए भाई, तो कोई इशू नहीं है। तुमने अभी तक चेस्ट खोले नहीं है। ये भाई ये चढ़ क्यों नहीं रही है? चढ़ रहे हैं बड़ी। Here come the fireworks! उसको असर ही नहीं होगा। Witness the power of Gugwa! Let's light it up! No, my sword! अच्छा, इसके नॉर्मल से अटैक से तो होगा ना सर? हाँ मैं तो भूल गया, नॉर्मल अटैक तो पड़ेंगे ना। पैरो नहीं तो नॉर्मल तो पड़ेगा। हट रहे, हम पैरो मारेंगे नहीं इसको।
नॉर्मल में ही बजाएंगे इसकी। ये भाई फुट गया ये तो। तू मर रहे बेटा, तू मर, बाकी सब मर जाएंगे। फुट गया भाई। Use your combo is same as mine, but instead novel is used by the तो खाना देने के लिए इतना मार खा रहा था। साला जोमेटो पर बना के छोड़ दिए। मैं डिलीवरी बॉय था तो फाइटिंग क्यों करते बेटा रे, इनकी माँ की कुछ भी कराते। ट्रैवलर है तो मतलब क्या कुछ भी। पहले इतनी लंबी पहाड़ी चढ़ना है, कैसे चढ़ा जाए यहाँ से। क्या हम पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे। आई थिंक वही है। अच्छा उसी को मारना है। चल बेनेट मेरे भाई तैयार हो जा। Adventure time. यस एडवेंचर टाइम। ये हट हट हट। आजा 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 आजा। Teamwork is dreamwork. Rain outlines your fate. अरे यार Let me weave you a verse. टाइम की वेस्टिंग हो गई हमारी। कहानी समाप्त। My team character are in level 70 but my world rank is 5. My world monster went to 69 to 80. अरे भाई मेरा भी सेम यही इशू है। मेरा भी वर्ल्ड लेवल 5 हो गया है। अब भाई ये लोग 70 तक आते, 80 तक आते। देखो ना मेरा भी वर्ल्ड लेवल 5 हो गया है। अभी जो भी मॉन्स्टर आ रहे हैं सब 70 प्लस आ रहे हैं या फिर 70 तक आ रहे हैं, ऐसा है। इतनों को तो मार भी नहीं पा रहा मैं, बहुत टाइम जा रहा मारने वालों को। मैं AR-43 भाई मेरा भी 43 है देखो। मैं मेरा वैसे भी 43 है। अबे अभी तो इतने सारे किया, फिर से इतने सारे कहाँ से आ गए भाई? अच्छा 1 2 तीसरा भी दिख रहा था। अच्छा इधर जाना है ना, बाद में जाते हैं दोनों कंप्लीट करके। इन लोग को लड़ना है। कितने लेवल वाले भाई इन लोग? चलेगा 65 क्या है तो भी चलेगा। Someone needs assistance. बहुत मारेगा बहुत मारेगा। ये गया मैं। Fire hazard. Let's light it up. वे ऊपर से तीर मत मार, बहुत मारूंगा साले। अरे 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 एक तोड़ दे, कम से कम एक तोड़ दे। मैं नहीं था अबे अंदर जाएंगे। Leave it all to me. Time to clean up. टूटा ही नहीं था भाई। एक टूट गया। I'll catch up. I must leave no I'm going in. Rain outlines your fate.
shall we? रस्ट मिलने के बाद डैमेज अच्छा मिलने लग गया मेरे को। अरे इसको मारना है, ठट ठट तुमने बट इसको मारूंगा। ये बड़े को मारना है, इसका सामान चाहिए, बाकी से भागो। बैनेट का ई दबाए रखो। अच्छा मुझे अभी मिला है भाई रस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, परसों ही मिला रात को जब मैं स्ट्रीम बंद कर रहा था तो रस्ट मिल गया मेरे को, वो भी स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड बैनर उसके अंदर ही रस्ट मिल गया मेरे को। हम लोग हार मान लिए थे कि रस्ट नहीं मिलेगा, मैंने पूरा वेपन वाले बैनर में किया इतना लेकिन नहीं मिला, बाद में ऐसी नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला मिला मेरे को, तो भाई उसको बस खोला कि नहीं मिल गया। तब इतना प्रीमोस वहाँ बर्बाद किया मैंने नॉर्मल वाले में। आज इतना लेट स्ट्रीम, अरे हाँ भाई आज देर हो गई है भाई बहुत, आज बाहर चला गया था काम से। और शुभम भाई वेलकम टू स्ट्रीम। Leave it all to me. Witness the power of Gugwa. The fuse is lit. आओ भाई कौन आ रहा, जल्दी आओ, उसको आन दो, उसको आन दो, उसको आन दो। Teamwork is dreamwork. इसको तो यहाँ से लेना, टूटी सिर बटा, अब मजे कर। भैंस की औलाद, Fire hazard. कुछ था, क्या था भाई पता नहीं क्या था। चलो अभी चलेंगे, बेनेट का ही दबाए रख के ट्राई करो भाई। रेडन विल इन 3.3 डोंट लूज दैट आर्कन करेक्ट। तो इसके बाद ही तो है ना, तो इसलिए तो पीटी बढ़ा के रख रहा हूँ, या तो अगर रेडन शोगन आई तो रेडन शोगन पहले लूंगा, अभी नायदा पे वेस्ट करके अच्छा नहीं है। मेरा पीटी बढ़ गया है। नसीब खराब है भाई मेरा, क्या हो गया भाई, क्या निकल गई। दिसंबर में आएगा रेडन, अबे तब तक का तो बहुत जमा हो जाएगा प्रीमोस, तब तक का ये भी हो जाएगा फिर तो। मैं तो स्किप करूंगा रेडन मोचे के लिए, मोचे। अच्छा वो टोपी वाला जिसका सब लीक हुआ अभी ना, Add Astra. एड एक्स्ट्रा अभी दे भाई Thank मेरे you को for दे। completing today's commissions. Here is your reward. नाहिदा आ गई, अरे तो भाई अच्छी बात है ना, नाहिदा मिली तो। यहाँ सब पगलाए जा रहे, नाहिदा कब मिलेगी। अपने पीयूष भाई को देख लो। Add Astra Abyss. अगर मैं कैरेक्टर यहाँ लगाऊंगा तो उसको यूज तो कर सकता ना, ऐसा भी नहीं यूज कर सकते।
इनाजुमा चलो भाई अब क्वेस्ट पे चला जाए यार को। आज तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिले खाली, बहुत मारूंगा। चलो यार 4 लोग हैं, 3 लाइक है यार, क्या कर रहे हैं यार, लाइक्स तो पूरे कर लो एक साथ। चलो समेरू समेरू, चलो चलो। चलो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम लैम्प में घुसो भाई, चक्रव्यूह में घुसो। अपना सेज बैठा है उधर पे, डॉक्टर स्ट्रेंज बैठ के बन के टाइम स्टोन लेके बैठा है भाई वो। Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? तरुण कहाँ गया आज? पता नहीं, मैंने उसको मैसेज किया आज, उसने कुछ बोला भी नहीं, मैंने स्ट्रीम वगैरह नहीं किया तो। हाँ उसकी तबीयत ठीक हो। ये भाई फिर से रिपीट हुआ क्या? क्योंकि अपने को इसके पीछे जाना था बात करने। Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too अबे अभी ये तो I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. भाई मैं इसके आगे तक जा चुका था कि फिर से रिपीट हुआ है। The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no यार longer पीयूष भाई ये return to क्या है यार, constant ये dream रिपीट पे रिपीट harvesting. खिलवा रहा है यार कसम से यार। वो डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाए बहुत मारूंगा उसको यार। हाँ भाई हम बहुत क्लोज थे, ये फिर तू थिंक अबाउट I can't कर। believe it. Wait, क्या यार? so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? नहीं वो वक्त में फंसे रहेगी। अरे माँ की यार तबीयत। She's actually something like a puppet, but not completely. माँ The की real यार। Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this फिर dream. 2 घंटा वेस्ट करो ये टाइम में। So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. हट रहे। Personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness. अबे नहीं भाई, ये रिपीट रिपीट में कुछ अलग बात भी कर लेते, क्या पता कुछ अलग ही रिपीट होता हो। देखो Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzerus festival with so many regrets.
Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. पकड़ के मारो साले को. I'm not beating myself up. मेरे को भी गुस्सा आ All रही I है, did was मिलेगा to ना भाई. rationally observe the distance between myself and a मैं तो real गुस्से में Archon. पीटूंगा साले को. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. हाँ हाँ. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, only that means this वो dream तो वही बोल belongs रहा, to a कुछ अलग host नहीं who है. created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power क्यों of रो रहे हो पीयूष भाई? imagination, रोना तो मेरे we को can चाहिए change यार, ये फिर anything से in वापस this से dream. चालू हुआ. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at the tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes, I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. हाँ ना भाई. Unnecessary things like this samsara need to end. गई अब इसके पीछे जाने का. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. Yeah, saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we?
You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. मर चुकी है वो. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. बड़वा When लाइन she मारता placed है. the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years. भाई 100 मिठाई खिलाने years, के बहाने कुछ ना I'll कुछ लेने serve की her सोचा till था the उसने. end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Faki? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you हाँ two. भैया लड़की का चक्कर. Anyway, never mind. I don't need to see पर her ये तो appear कोई right और in front चक्कर of से me. लेने की सोचा As था long as उसके. she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her, but none of them has any idea that she... My lady, step back. आ गई. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Huh? But Dia can handle them. Hey, traveler! भाई को गुस्सा आ गया. डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी वाट लगा दी इसके दिमाग की. Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. बे हीरो ने बोला लेके निकलने का तो लेके निकलने का. निकल, टाइम खराब मत कर. Ugh, fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills.
बच्चा समझिए क्या? Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. That's close enough. New punch. Let's light it up! Take cover! Off we go! I'm going in! Time for a light show! तलवार पकड़ता है मादरजात, हेडशॉट। That's close enough. और भी कौन है रे इधर आ? Let me weave you a verse. Know my soul. The fuse is lit! Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? ये कौन पड़ेगा रे इतना? Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? It's Dunyarzad's puppet. Traveler?
must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. बाय वसीम भाई, बाय शुभम भाई। यार लेट हो गया, मालूम है आपको, सोने का टाइम हो गया है। चलो कोई ना, गुड नाइट भाई। Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Milu's dance of Sub-Zerus. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? Watch the dance also. हाँ, चल भैया डांस देख के ना ये। If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler. Traveler? ये What बड़वा the heck are strange you बन रहा है। doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisarahs went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisarahs in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisarahs?
just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Huh? You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Purple body Saras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage! It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Patisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? ये सबकी जोड़ी है ये. So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story! I see. Well, it just so happens that today's Sabzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzeruz as beautiful as we can. मैच मेरी बिल्डिंग. The wait is over, everyone.
I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zeros. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. भाई सारे स्पिरिट को बुला रहे हैं सबके हाथ में Oh, good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero Samsara? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? ठीक हो गए Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream. And I saw Nilou performing the dance of Sub-Zeros. कंप्लीट नहीं नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है भाई बहुत बाकी You're actually कैथरीन क्या Nahida, बोल रहे aren't हैं you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? Talk to Nahida. Let's talk about Dunyarzad first.
It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. अच्छा नाहिदा है Once Dunyarzad अबे could मैं no अभी पढ़ा longer ना bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. वाह भाई वाह Both are fine. Everyone reacts differently. Alright, you two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. हाँ You पहला also जब heard घुसा someone's था voice, right? It said world and forget राइट me. में हाँ सुना था Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal,
My consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Oh, hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sub-Zero samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Got it!
I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the Sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. अरे हाँ बेचारी का बर्थडे भी था आज। Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. रॉबर्ट को भी नींद आती है। We've spent quite some time in Sumeru City. कंप्लीट नया क्वेस्ट आया। फाइनली ड्रीमिंग खत्म हुई। यार पीयूष तो बोल रहा था 4-5 दिन लगेगा पीयूष में। फाइनली खत्म हुआ भाई। हैप्पीली डॉक्टर स्ट्रेंज बचा हुआ। और कौन है बे अभी बचा है? आइला बचा हुआ है। सो वीकली बॉस मारा जाए। Oh, we can't just... पीयूष भाई आते अपन वीकली मारते। डिस्कॉर्ड आ जाओ। Books are for now, ये तो हो गया। but friends are for... 40 और बचे हैं भैया। Time for a light show. पीयूष भाई आ जाओ डिस्कॉर्ड वीकली बॉस मारते हैं। बाद में इसको खत्म करेंगे। अरे नहीं रे कहाँ से पहुंच गया इसके पास? Ad Astra Avisask. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? पीयूष भाई Oh, किधर रह गए? आओ। The commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Was it so obvious?
I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Ad Astra Astra Ad Ad Asask. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. It was another dream about the Sub-Zero's festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homiyanis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival? So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Cheers, bye. Let's continue our chat here. आ रहे नहीं आ रहे? Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core of 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages.
That's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. चलो वर्ल्ड बॉस मारते हैं। चलो भाई, कौन सा योइमिया का? हाँ नहीं, वर्ल्ड बॉस मारेंगे ना जितने वो 3 clients. वीकली बॉस, वाले, अच्छा। वीकली बॉस। हाँ, चलो किस पे चलना है? स्टार्ट का पता ही नहीं आज कहाँ रह गया, कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं। तो पहले स्ट्रीम लेट होती तो पूछता था स्ट्रीम करने वाले हो क्या, ये सब आज तो कुछ नहीं पूछा है। आपने कॉल किया उसको? कॉल भी ट्राई किया, लगा नहीं उसको। मैं भी रेस्ट कर रहा होगा, कल जगा था ऐसे 5 बजे तक जगा था वो कल। नहीं रे, सुबह सोया था वो, रात में जागता है सुबह सोता है वो। ऐसे अब इतना टाइम तो जग जाना चाहिए, वैसे उसने कुछ इन्फो भी नहीं दिया। आई होप उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अभी मुझे बता रहा था उसने कि तबीयत का थोड़ा इशू है। मैंने कहा भाई रेस्ट कर, इतनी उम्र में होना नहीं चाहिए सब। आज लेट आया तो कोई पब्लिक ही नहीं है। हाँ आज काफी लेट हो गया। अब भाई क्या कहते कितने 12 बजे स्टार्ट हुआ कुछ स्ट्रीम? 12 बजे स्टार्ट हुआ। ऐसे जनता 9 बजे से बैठना चालू हो जाती है ना स्ट्रीम पे। फिर कई लोग छोटे छोटे रहते हैं तो भाई उनका सोने का टाइम होता है। रुक जा, मैं बैनट ले लूँ। If we've Start got करूँ? nothing else to do, why don't I tell you a story? Fire hazard! साला मेरे पे क्यों मार रहा है? अरे भाई Off we go! Everybody stand back! Time for a lecture! चाइल्ड भाई 3 और 5 स्टार आर्टिफैक्ट मिले, 3 5 स्टार। तीनों सही है क्या? 2 मिले हैं, एक ये डिवा ये यार मिला है। भाई देखो 3 5 स्टार आर्टिफैक्ट मिले भाई, विदाउट 45 AR के। हाँ अरे वो 2 आर्टिफैक्ट हैं और एक मटेरियल है। वो आर्टिफैक्ट नहीं, वो मटेरियल है, वो टैलेंट अपग्रेड करने पर ये लगता ना है। 2 तो मिले ना।
नहीं अभी अनलॉक नहीं किया हूँ भाई। गुरुदीप भाई अभी अनलॉक नहीं है। भाई अभी इनका AR 45 भी नहीं हुआ। अभी हो जाएगा हम लोग, आर्कन क्वेस्ट हो ही जाएगा इनका 3-4 दिन में। और हाँ और 3-4 दिन लगेगा अनलॉक होने के लिए। चलो चाइल्ड को मारे। मेरे को बाद में पता नहीं आर्टिफैक्ट सही है क्या। हाँ हाँ हाँ। गुरुदीप भाई स्ट्रीम पे आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हाँ सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। मोदी जी बिगिनर प्लेयर। हाँ भाई बिगिनर अभी स्टार्ट किया हूँ खेलना। अभी 20 दिन से खेल रहा हूँ सिर्फ मैं। Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. काट ले दो भाई। चाइल्ड ले रहे हो क्या भाई? अगर रेडन साथ में रही तो रेडन शोगन के साथ जाऊंगा। अरे बहुत टाइम है रेडन शोन को। ऐसे अगर दिसंबर है। रेडन का अगर बैनर साथ में रहा अगर चाइल्ड के This तो फिर opportunity is quite hard रेडन to के साथ come by. जाऊंगा। Well then, वैसे चाइल्ड भी अच्छा amuse है me. ऐसा नहीं है। Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Ready? Not bad. You've got a trick or two. Adventure time. All you do is run. Teamwork is strength. Feel the split. किधर गया रे बड़ो? दिखता भी नहीं है साला। सर मोदी जी थे कहाँ आप? ये भाई ये बहुत पीटेगा। Off we go. Adventure time. Let's light it up. Torrent, bring up you. Adventure time. Rest and rebuild. See? A festive retreat. अरे क्या मार दिया? Going in. Time for a light show. वाह इसमें एक मिला। अरे कैरेक्टर मटेरियल मिला। अरे भाई मैं वेपन में कितना पुल किया रस्ट निकालने के लिए नहीं निकला। बाद में जाके परमानेंट बैनर है ना उसमें किया तो भाई उसमें निकल गया स्टैंडर्ड बैनर के अंदर रस्ट। अभी कौन बची है? यही में कौन है वो? इग्नोरा। सिनोरा। 20 की लेने वाली। यहाँ तो एसडा है, किसको मारना है? फर्स्ट को मारेंगे बाद में उसको भी मार देंगे। चारों को मारेंगे। If we've got 5 nothing स्टार else to निकल do, रहा है यार। why don't I ट्राई tell करें you a एक बार story? 5 स्टार में। आर्टिफैक्ट के लिए हम्म, हाँ ट्राई करते हैं ना अभी। रेड के पर राइजन बचेगा नहीं ना। हम्म 100 है अभी। 2 बना लूँ अपना कंडेंस जाके ट्राई करके आए। ये तो बॉस कल भी मार सकते हैं ना। 1:30 बजे के बाद ये बॉस मारते हैं। अभी टाइम है ना। ये बहुत हफ्ते भर मार सकते हैं, हफ्ते में। हम्म, हफ्ते में एक बार मारना होता है, कभी भी मारी। है ना। Now, this is what I call तो a चल पहला वो moment कर of लेते हैं फिर। solitude. कंडेंस बना लेता हूँ जाके एक बार चेक करके आते हैं। अरे रखो आगे फिर से बैनर आने वाला है उसका नायदा का। 3.4 में आ जाएगा। 3.4 या
3.6 में 3.6 में आएगा। हाँ चलो उसमें जाते हैं। क्या बोलते तुमको जाना चाहिए? मैंने तो चलो भाई एक ही दो करने में क्या ही हर्ज है भाई। एक ही करके देख लेते हैं, बाद में आके मार देंगे इसको भी, और क्या। हाँ ना। एक ही कंडेंस बना लेता हूँ, है ना। हाँ बना लो एक कंडेंस। अभी एआर क्या हुआ आपका? 43। 43। कर सकते हो आप ऐसे। आज या अगर आ जाओगे ना AR44 तो कल तो AR45 कर ही सकते हो अगर दिन में 2 टाइम खेलोगे तो। ऐसा चेस्ट वगैरह टेलीपोर्टेशन इससे बहुत एक्सपी मिलता है और क्वेस्ट से। अच्छा ये वीकली बॉस को 30 राइजन लगता है ना? हाँ ऐसे 3 मारने पे 30 लगता है, फिर जो चौथा होता है उस पे लगता है 60। ऐसा क्या? 3 मार लेंगे अपन, चलो। हम्म। चलो चलो बाबा, एक बार ट्राई करें, क्या पता मिल गया तो। आ जाओ मैं यही तो हूँ। योमिया का मिल गया तो मजा आ जाएगा भाई। एटलीस्ट 2 पीस तो मिल जाए। हाँ ना ऐसे 4 पीस पूरा नहीं लगा है ना। हम्म। अपना क्या क्रिम्सन कौन सा है वो, एक 2 पीस लगा है। क्रिम्सन फिलहाल के लिए ठीक है बट शेमिना वही चाहिए रहता है इसको। सिमनावा 2 पीस निकलेगा तो वो भी लगा देंगे अपन, 2 पीस। एटलीस्ट हम्म। जब तक काम चला उधर का। चाइल्ड पहले आएगा, देन रेडन। क्या लोगे आप? यार वैसे चाइल्ड का भी गेम प्ले अच्छा लगा मेरे को, तो चाइल्ड के साथ डेंडो रहे तो समझ में आए। हम्म, देखते हैं भाई, जो निकल गया नसीब उसमें भी पोल करके देखेंगे। Time to act. Off we go. Let's light it up. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Firehead. अरे ये भड़वे को मार रही है, भड़वे को मारिए, भड़वे को मारिए अंदर। ये साले अबे मार दिया। Off we go. Everybody stand back. ओह फाइनली एकदम टाइम पे मारा मेरा, जैसे ही मेरा गेम बंद हुआ भाई। 5 सेकंड बचा था भाई। देखो क्या निकलता है। देखते हैं। आ, चलो भाई बॉस मारेंगे, यहाँ नहीं निकल रहा कुछ। अरे बेकार। चलो अभी चलो शिमिनावा में Let's find shelter quick. पड़ा है। Oh, we're not going to अपन make अपना it. बॉस ही मारेंगे। कहाँ गई वो? इधर ही रहती ना। हाँ इनुजुमा में ही है ना वो? हाँ इनाजुमा में ही है। पर आप कैसे मारोगे, अकेले मारना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम लोग ने कोऑप में मारे ना। अभी तो मेरा गेम बंद हो गया ना। क्या बात कर रहे हैं जैसे ही यार, मैं फिनिश किया। यही तो सबसे हाँ हरामी है। जैसे ही मैं फिनिश किया वो मर गया। Oh, oh. गया तेरा चार्जिंग खत्म। हाँ AR50 के बाद रेजिन लगाने चाहिए।
नहीं यार 45 के बाद गारंटी होता है 5 स्टार, उसके बाद यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत अरे नहीं भाई भाई अभी यार एक साथ 45। एक साथ दो निकला तो मैं सोचा क्या पता मिलेगा, चलो 1 लाख वहाँ भी ट्राई करते, लेकिन मिला ही नहीं। अच्छा ये अभी दो निकला है, देखते हैं कौन सा है। गॉबलेट में निकला और एक इसमें निकला ना। हम्म। अभी किधर गया नहीं। Fireworks are for now, but friends are forever. एक ये निकला न्यू हीलिंग बोनस। हीलिंग बोनस किस पे यूज करोगे? मेरे चीची को पे लगा सकते हो। सीची पे लग जाएगा ये। दूसरा कौन सा बेनेट पे है? लगा एलिमेंट मैस्ट्री एक है और एक तू आया वापस गया। एलिमेंट मास्टरी डेंड्रो कैरेक्टर के लिए बढ़िया है। एक एलिमेंट हम्म। मास्टरी और एक ये निकला है हीलिंग बोनस। ये तो यूज कर रहा है। मुझे एक क्रिट Have you रेट है ever मेरा। kept goldfish as pets? They're very cute. शिमिनावा पे फिल्टर करिए डिफेंस है। सारे। सिमनवा पे नहीं है ना, चेक किया मैंने। गंदे। ये डिफेंस है, एक ये अटैक परसेंटेज है गॉबलेट में, और सन ऑफ एन में कुछ नहीं है, इसमें 4 स्टार के ही है, दोनों अटैक है। और ये तो हीलिंग वाला है भी नहीं। ऐसे इसमें 4 स्टार है, चलो 4 स्टार का यूज कर If सकते हो। we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? ये दो है, एक एचपी और ये किस पे लगेगा? ये कौन सा है? एच इन ऑब्लीज बेनेट हाँ पे। बेनेट पे लगा दो दोनों। एक अटैक हाँ परसेंटेज है और एक ये हीलिंग है। पहले ये वाला लगा दीजिए, एचपी वाला, और हीलिंग वाला। अटैक वाला मतलब ये। नहीं नहीं, दो ही है, एक मतलब एचपी वाला है और एक ये अटैक परसेंटेज है। फिर एक काम करिए, एचपी वाला लगाइए और ये अटैक पर। ये दोनों लगा देता ना, दो का सेट कर देता उसको। हाँ बट अटैक ना लगाइए, फिर बेनेट का हील कम हो जाएगा। ये भी बात है। हाँ आखिरी में एक हीलिंग बोनस मिला होगा ना, हीलिंग वो बोनस लगा नहीं दीजिए। मिला ना मेरे को, दो ही है Have ही है you मेरे ever पास। kept goldfish as pets? किधर They're गया रे? very ऐसा दो है cute. मैंने। देखना, एक ये एचपी है परसेंटेज और एक ये है। हाँ ये लगा दो फ्लावर। ऐसे क्लिक करोगे ना भाई, देखो ऊपर एक छोटा सा वो लिखा है एट्रीब्यूट रेफरेंस, कॉर्नर में एक बटन है, उस पर क्लिक करोगे, उसमें दिखाता है यार टॉप कितना है पे। आपका? 43 है भाई। क्या बोल रहे? ऐसे एट्रीब्यूट रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो उसमें दिखाता है कि कौन सा ऐसे स्टार्ट लेना है। Fireworks are for now, but friends. Oh, ow! Where did that come from? क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, हीलिंग बोनस। जैसा दिखा रहा है ना वैसे ही लेना जो टॉप पे है। मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं, इतने परसेंटेज लोग। Benny's adventure team, हीलिंग बोनस होगा assemble! ऊपर सबसे टॉप पे, फिर एचपी, Oh, oh, फिर एचपी। or not. अभी जो आर्टिफैक्ट निकले वो काम के नहीं है। नहीं भाई वही तो कह रहा ना यार, 40 हो जाएगा तो आपका जो रेजिन है 50-60 कुछ रेजिन पड़ा होगा फ्रेजाइल वाला, हाँ पड़ा है। उसको यूज करेंगे ऐसे 3-3 करके, और खूब सारी कंडेंस बना लेंगे, फिर एक ही बार में करते चलेंगे, कम से कम 1-2 घंटा अगर 2 मिनट करेंगे तब मिलेगा आर्टिफैक्ट। तब कितनी बार भी जाएंगे ना AR45 के बाद, हर बार 5 स्टार आर्टिफैक्ट मिलेगा एक, कभी कभी 2। Oh, oh. अरे भाई मेरा AR44 अभी हो जाएगा।
अभी वो क्वेस्ट कंप्लीट करूंगा तो यार 44 हो जाएगा। मैं आपसे रेस लगा रहा हूँ और मैं एयर 44। कभी कितना है एक्सपी बाकी लेना? 2000। ये बॉस मारते थे हो जाता था। 2000 भी नहीं, 1000। 1000? ऐसे 5 मिनट रुके, मेरा गेम खुल ही गया बस। तब तक चेस्ट वगैरह कलेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है? उससे भी एक्सपी मिलेगा एयर 44। अरे बाप रे, इतने प्रीमोस भाई! पूरी किताब भरी है अचीवमेंट की। ये कल से लेके अभी तक का। Fireworks are for now, but friends are forever. चलो, मेरा गेम 10 भी हो और गया। चाहिए। आओ मैं पानी पी के आता हूँ। मेरा गेम ओपन हो गया है। मैं पानी आप पी आराम से लेता पानी निकलो। हाँ बिल्कुल भाई। मेरा तो यार 45 क्लोज है। सही है भाई मोदी। मेरा सेकंड अकाउंट है भाई, वो हो चुका है यार। 46 47 होने वाला है। पर पता है मोदी भाई, खेलता नहीं हूँ भाई Have you ज़्यादा। ever kept goldfish as pets? They're very cute. और बताओ मोदी, क्या चल रहा है? बढ़िया सब? मॉर्निंग से डेली क्वेस्ट। सही है भाई। डेली क्वेस्ट मतलब क्या, कमीशन, या मतलब कल मॉर्निंग से क्वेस्ट करने लगोगे ऐसा कुछ? नहीं, कमीशन आ गया भाई। बहुत निकाल लो। जनता आगे रहेगी, बिल्कुल भाई। यार मोदी भाई, सड़कें बनवाओ भाई, हमारे यहाँ की सड़कें खराब है भाई। रोड वोड ठीक कराओ भाई। Fireworks are for now, but friends are forever. रडन निकालूंगा, देखते जाओ। रडन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। बेस्ट। जब पहली बार देखा था रडन को, मैंने कहा था वो कितनी सही है भाई। रेडन निकालूंगा, देखते जाओ। अच्छा भाई देखते। We've got nothing else to do. Why don't I हो tell गया you a तेरा? story? हाँ आओ। आजा आजा। जब तक ना जाते। मॉर्निंग से डेली क्वेस्ट। बाय बाय। इधर हो तुम? टेलीपोर्ट वहां पे हो गया मेरा। भेजो भाई। आजा। स्टार्ट।
dare overstep your mortal authority? Let's light it up! There is no atonement इसकी or हेल्थ नहीं कम हो रही है। 1,000-year pain! Today, you witness your reckoning! मसाला पायरो बन गया। मेरा अटैक तो काम ही नहीं करेगा इसको। Adventure time! Off we go! Huh? I'm going in! The fuse is lit! The enraged Earth will not absolve you! भाई ये पेड़ है। भाग बेटा, बहुत गई लाइट। आई, तो मैं जिंदा ही था, मर कैसे गया? Adventure time! भाई इसको मार, मैं मरना नहीं चाहता। अरे उसकी हेल्थ ही नहीं कम हो Adventure time! रुक जाता है तीन Experience an eon of मैं suffering! मर गया अंदर। भाई सर्कल से बाहर निकल पे लेगा वो। भाई निकल, मरेगा नहीं। भाई मर ही रहा हूँ मैं। हेल्थ कैसे जा रही है? Jenny's adventure team! I have failed you. मर गया मैं। तू मार सकता है? मार 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 मार, सॉरी तुम्हें। जा चुका, आप जानते हो मैं वो बंदा हूँ जो पबजी एस मास्टर जा चुका। अरे वाह, फाइव स्टार मिला इसमें भी। अटैक परसेंटेज क्या है इसके में? और एक मटेरियल मिला। ये अटैक हाँ कौन से आर्टिक मतलब क्या दिया? सैंड से? अच्छा बढ़िया, तो सैंड्स पे अटैक सही रहता है। वो जो गॉबलेट रहता है ना, और आखिरी में जो हैट मिलता है उस पे अटैक परसेंट बेकार रहता है। उसमें क्रिट डैमेज होना चाहिए, तो क्रिट रेट होना चाहिए ना। हाँ, उसमें क्रिट रेट या क्रिट डैमेज, हीलिंग बोनस। चलो कोई ना। तो मेरे पास तो इसमें है यार। आखिरी वाले में अटैक परसेंटेज है ना, क्रिट रेट उस पर है। एक है लेकिन वो इसके काम नहीं आएगा ना। Oh, ow! एनर्जी रिचार्ज 5.8% हो रहा है, और जो मेन है क्रिट रेट है 11.3%। इससे कितना पैसा है? Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. पर इसका शॉट में कितना वीक है? Let's go find some treasure. आज यार 45 करना सब एचपी वाला बहुत सारा है इसमें। इस पे ही लगाओगे इसका एचपी? ऐसा सेट होना चाहिए ना, बेनेट के जैसे वो लगता है। 4 पीस नॉबलीज, 4 पीस बेनेट के लिए। Benny's adventure team, assemble! इस पे तो ये लगाया है मैंने। अभी कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, और अभी कोई लगाने वाला भी नहीं है। मतलब बाद में समझाओ इसका मेरे को। हाँ, इसकी पूरी मैथ समझाता हूँ मैं आज आपको। यार 45 करूँगा। ये बहुत अच्छे भाई, मेरे से आगे ही चल रहे हैं।
अपना तो 45 टाइम जाएगा। यार 45 कर सकते हो भाई, एक दिन में कर सकते हो बिल्कुल आराम से। 13,000 चाहिए रहता है एक्सपी। डोमेन करो, उससे मिल जाएगा। फिर क्वेस्ट डोमेन के लिए भी करो। रेजन चाहिए ना। Good things come to हाँ ना, those who ऐसे don't क्वेस्ट wait कर लो। around. अरे डेली That's रेजन what they बता रहा say ना, anyway. 160। Knowing my उससे मिल luck, जाएगा थोड़ा the एक्सपी। opposite is probably true फिर for ऐसे me. क्वेस्ट कर लो, वर्ल्ड क्वेस्ट 2-3 मिल जाएगा। नहीं तो आर्कन क्वेस्ट कर लो भाई। और कौन बहुत लंबा चल रहा है बाबा। डिबेट जान क्लब फट ले गई, वो लो। साला डॉक्टर स्ट्रेंज बन के बैठा है इसकी माँ की। Benny's अरे adventure team, assemble! वो कैसे ब्रोक किया भाई, जब वो नीलू देख रही है क्या पूरा ड्रीम तो भाई। नहीं वो पता है वो क्या चल रहा है स्टोरी में। ये जो सेज से बुढ़े लोग नहीं है हाँ सुमेरो में, इन लोग ये लोगों ने जब ये 2 गॉड रहते हैं, पहले बता रहा हूँ। जो पहले गॉड रहता है ना, उसका नाम रहता है नाइदा। Adventure time! ओ सॉरी, हाँ रुकदवाता। बराबर, उसके बाद दशरथ है। हाँ, तो जो नहीं दशरथ उससे भी पुराना गॉड है, रुकदवाता से भी। तो जो रुकदवाता गॉड होती है हाँ, वो मर जाती है। तो जो सुमेरो के लोग होते हैं बुढ़े लोग, तो उसको भुला नहीं पाते हैं। तो जो नया गॉड आता है वो आती है नाहिदा। तो लोग कहते हैं यार ये नाहिदा तो बहुत छोटी बच्ची है, और इसके अंदर मतलब इंटेलिजेंस है ही नहीं जितना इंटेलिजेंस रुकदवाता के पास था। तो लोग कंपेयर करने लगे। तो क्या किया इन्होंने, नाहिदा को जेल के अंदर डाल दिया है पकड़ के। अभी जो नाहिदा आपको दिख रही है ना, ये उसकी कॉन्शियसनेस है, मतलब उसके वो बस दिमाग से एक कंट्रोल कर रही है चीजें। और ये जो सेजस है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ा। तो ये जितने लोग हैं ना सुमेरो के अंदर, इन सबको ये एक दिन के अंदर रोक दिया है, एक डे में फंसा दिया है गॉड क्रिएट करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा पूरी सिटी पे, ये कह सकते हो आप। तो उसी को रोकने के लिए नाहिदा और एक ट्रैवलर हेल्प करेंगे, वह फिर आएगा। अरे लेकिन उस लोग ने ब्रोक कर दिया ना अभी सिस्टम, वो लोग ने उसका जो चल रहा था नहीं टाइम अभी, स्पीड। हाँ वो अभी सिर्फ टाइम लूप ब्रेक हुआ है ना, पर जो गॉड है, जो नया गॉड बना रहे हैं लोग, वो दिक्कत है मेन। क्योंकि इन लोग के पास तो अपना गॉड है ही, तो उसके बावजूद भी ये लोग गॉड क्यों बना रहे हैं, अपने सेल्फिश रीजन की वजह से, मतलब ही No one's चीजों की वजह joined me से on और an गॉड adventure बना in रहे हैं। ages. Come on, let's पर वो go! सब ठीक हो जाएगा आगे। ऐसे क्वेस्ट करोगे। अभी 2, अभी कितने हैं, 2 ही पार्ट अभी स्टार्ट हुए हैं आपके, 3 पार्ट और है। अभी 3 पार्ट और करने हैं इसके, लगेगा याद आराम। याद रखना, ये झाड़ के ऊपर मेरे ये है चेस्ट पड़ा हुआ, हाँ लग्जरीज। अभी पड़ा हुआ है, वो लिया नहीं क्या आपने? और वो सिली चाहिए उसके लिए। अरे तो देखो जो स्टैचू है ना सिली वाला, उस पे जाओगे पास तो वो एलिमेंटल साइट वाला बटन दबाओगे, तो ऐसे दिखाता है, एरो दिखाएगा ब्लू कलर की, किधर जाना है। उसी तरफ सिली पड़ा रहता है। दिखा तो रहे। दिखा रहा होगा ब्लू ब्लू की किस साइड सिली है, उसी तरफ रहता है। झाड़ के बीच से दिख नहीं रहा ना, पत्ते आ रहे बीच में। अच्छा इधर ही है सिली, सिली इधर ही है, सिली इधर ही है। दूसरे इस पे बैठी है, पर 2 चाहिए। एक दूसरे और पे। होगा, दूसरे स्टैचू पे जाके देखिए होगा। अरे गिरता क्यों है, हराम जादे। एक इसके ऊपर है। ये साली नीचे जा रही है यार। गई नीचे, ऊपर आने का अरे हाँ भाई, इसको नीचे जाके लेके आओ। माल लाना ही पड़ेगा अगर चेस्ट खोलना है तो। 10 प्रीमोस देगा, नहीं 5 प्रीमोस देगा जहाँ तक, 10 या 5 देता है। एक तो मुझे दिख गया यहाँ पे, इतने कोने में है भाई। आया क्या ऊपर वो? यहाँ पे है भाई, इतना दूर। ये ऊपर आया क्या, उसको लेके आओ। मतलब नहीं दिख रही मुझे। Now that's what I 2 call treasure. प्रीमोस दिया, हराम कर साला। दूसरा कहाँ पर है? दूसरा शायद उधर है, पेड़ के उधर पे, जमीन पे उस पे।
एक तो ये रहा, मुझे तीन मिल, दो में दिख गए हैं, दो सिली, एक इधर है मेरे पास और एक पेड़ के सामने ही है नीचे में। गिर मत, मेरा बड़े भाई गिर गया इधर इसलिए। मेरे पे आओ, एक सिली यहाँ पे है। वो तो उधर का देखा मैं। और एक यहीं नीचे है आपके। वो तो कहीं और ले जाएगी यार, इसलिए चढ़ाएगी जस्ट तो। नीचे ये रहा। वो मालूम तो पहाड़ पर जाएगा, उसको बाद में देखना। छोड़। मैंने 70 पूल खर्चा कर चुका हूँ। रेडिन आजा, इंतजार है। Adventure time. 70 पूल कर चुके भाई। भाई फिर तो रुक जाओ, अगर 50-50 है क्या है तुम्हारा? अबे 70 पोल पड़ा हुआ, अगर 20 भी रहा पीटीएम के पास भी तो आराम से घसीटी ले लेंगे। एक अगर गारंटी नहीं होगा ना तो ऐसे भाई हार भी सकते हो। ऐसे टोटल ना गारंटी करने के लिए एक 5 स्टार जैसे रेडन चाहिए और पिट्टी नहीं बनी है तो कम से कम 190 पुल 180 सॉरी 180 चाहिए रहते हैं टोटल। भाई बहुत महंगे कैरेक्टर है भाई, बहुत महंगा, लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं ऐसे। वो स्काउट नहीं है पबजी वाला, उसने टार्टेरिया के बैनर पर निकाला तो था, 20,000 रुपए लगा दिए हैं। खाली क्या दौड़ाते रहे, मतलब गुस्सा आते लोग को। दिमाग खराब करते हैं भाई। दो प्रीमियम It's a miracle. 10 मिल गया इसमें, नहीं मिला। ये क्या बड़ा? दो 5 6 हो गया रे, एक विश हो गया। चलो यही पेड़ पे विश करते हैं। नहीं भी एक कम है। 59 है, 159। यहाँ चैलेंज पड़ा है, ये कर लेते हैं। अभी से विन कहाँ से आई है? यहाँ पे आती रहती है लोगों में, ऐसे चलोगे ना उड़ते उड़ते तो अपने आप आ जाता है। ये चैलेंज है यहाँ बड़ा। 1 साल पहले हम भी देखते थे उसको भाई, मैं तो नहीं देखा आज तक। एक ही बार देखा, वैलोरेंट खेलता है उसके। मैं भाई पहले देखता था जब पबजी खेलता था, फिर उसके बाद बंद। अबे यार ये तो गलती क्रायो दिया है, वाह दोनों ही नहीं यूज कर सकता मैं। मैं तो कर कैरेक्टर ही गलत है मेरा। मैं मारता हूँ एक बार खाली, उसका हिल आ जाए तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अरे टाइमर है, टाइमर मारना रहता है। अरे वो 10 सेकंड में नहीं मरेंगे ये तो। बस अभी मारेगा, टेंशन नहीं। हो गया खत्म, मतलब काम। Teamwork is dreamwork. Fire hazard. चैलेंज फेल्ड। रुके चालू कैरेक्टर चेंज कर, कर लो। चालू कर। कैरेक्टर कहाँ गया? A brash maneuver. Fuse is lit. अबे चढ़ मत भाई, खत्म, टेंशन नहीं। पेड़ पे चढ़ने लगता है भाई, मार रहा है इसे। Ooh, will we find any firework materials Oh, inside? नाहिदा के बैनर पे। लेट्स डू इट। कौन निकला? कुछ भी नहीं निकला। चलो पीटी तो स्ट्रांग हो रही। पीटी कितना हो गई क्या देखो, है? काउंट कर लीजिए। वही देखने आ रहा हूँ। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61,
61। 61 नहीं, हाँ 61 12 पैसे ही। 61 ऐसे 9 करेंगे तो आ जाएगा 5 स्टार इन 20 पुल में या 10 पुल में। क्या था भाई ये? पता नहीं, ऊपर की तरफ मुझे कुछ दिखाया। यहीं पर मैं था, कुछ डिग करना दिख रहा था, चमक रहा था वो, कुछ दिखा ये नहीं। चमक रहा है। क्या खोला तो समझ में नहीं आया। अच्छा सुन ना, 10 वो बाकी है अपना, कर लेवे क्या आज ही खत्म कर ले, इंटरेक्टिव ऐप करके मैप खोल के। क्या 10? एनिमो वाला कौन है भाई? इसको मार, ये चाहिए मेरे को। इसको चाहिए मेरे को। अभी सामान नहीं गिरा है। ये फायदा क्या है? Ooh, let me open it. चलिए ढूंढे, 10 ही बाकी, टावर 10 हो जाएगा, स्टेमिना भी फुल हो जाएगा मेरा फिर। चलो एक काम करते, पहले ये कर लेते, अपना 44 हो जाएगा, क्या कमीशन मिशन कर लेते हैं आगे। इस पे क्या है? डिस्ट्रॉय टू हिल जाएगा। तो दूसरी जगह खेल, मैं इधर खेलता हूँ, इधर वाला नहीं करता है ना। फाइट करने वाला कर ले रहा हूँ मैं। हाँ तो फाइट करने वाला कर ले, बाकी इधर भी मैं कर ले रहा हूँ। लड़के तो बत्ती We're gonna get soaked. Let's find shelter quick. We're not going to make it. ऊपर वाला एक मेरा बढ़िया। The fuse is lit. Let's light it up. I'm going in. Fire! That didn't count. ना किया ये कितना फास्ट है बतू। Light up, please. शील्ड लेके बैठा ना बढ़िया। मैं तोड़ता हूँ इसको। टावर हाँ टावर ही तोड़ता हूँ मैं, बोला इसको खत्म करता हूँ। Off we go. इधर ही खड़ा रहो, इधर ही खड़ा रहो, मेरे इधर ही खड़ा रहो। जा Off we go. हो गया 44। Adventure time. Adventure time. दूसरा कहाँ पर है? Alright then, 44 done. आखिरी बचा है। आखिरी बच्चा है, तुम पहुंच गए वहाँ पर तो हम वहाँ जाते हैं। ये बात करने वाला है शायद। हाँ बात करने वाला है? हम्म। आया मेरे को।
अर्जेंट रिपेयर है रे इसकी जान। Off we go. Allow me. Let's light it up. चल बस ये गाड़ी को संभाल कर ले जाना। मैं चलाऊंगा भाई। रस्सी किधर पड़ी हुई है? किधर ऊपर होनी चाहिए? Adventure time. Off we go. अरे भाई मेरी अब क्या चाहिए? क्या कर रही है तू भाई? दो चाहिए था। Time for a light show. ये साला नौकर बना के छोड़ते हैं इनकी नौकर। बेचारा संभाल लेने। उनके बाप का खा के देता है। भाई 2 बार साले को पिल्ले से बचाओ, रस्सी भी लाके दो, ये भी लाके दो। गांडू अपना धंधा भी हम ही दे दे फिर। इससे पहले देखा ना कि खाना डिलीवर करो बचाओ भी। हाँ ना। चलो भाई कमीशन का रिवॉर्ड ले ले। और अभी सवेरे का बाकी है, अभी कल कंटिन्यू करेंगे। थक गया मैं बहुत। बाहर गया था ना, आवाज सीधा बैठ गया था। अरे बात नहीं करोगे ना? लीव कर रहा हूँ, बंद कर दूंगा ऐसे। स्क्रीन भी ऐसे बंद कर रहा हूँ। Ad Astra. Astra Abyssosk. Thank you for completing today's Ad Astra Ab एक विश मिल रहा है। लेट्स सी विश में क्या मिलता है। विश में क्या है देखो। लल्ला। Have you ever kept goldfish as pets? They're very... cute. चलो भाई आज के लिए बस करते हैं, थक गया हूँ काफी। करेक्ट 2 घंटे में स्ट्रीम बंद करने जा रहे हैं अपन। वाह चलो भाई गुड नाइट। पीस पे तुम डिस्कॉर्ड पे बैठे रहना। भाई मिलते हैं भाई कल की स्ट्रीम में वापस। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। अभी के लिए चलते हैं भाई। बाय। ओके।